नमस्कार। आज की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का विषय है सामाजिक विकास अवधारणा और सिद्धांत, सोशल डेवलपमेंट कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज, जो कि हमारे मास्टर्स पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के MRD 201 कोर्स का एक भाग है, जिसका नाम है रूरल सोशल डेवलपमेंट, ग्रामीण सामाजिक विकास। आज की इस चर्चा में हमारे साथ ग्रामीण विकास विभाग से सहायक आचार्य डॉक्टर बलकार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मृणाल कांति देव जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर के श्रवण कुमार मौजूद हैं। तो आज का विषय है सामाजिक विकास अवधारणा और सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो सामाजिक विकास है उसकी क्या अवधारणा है और क्या सिद्धांत है। इस चर्चा में हम ग्रामीण सामाजिक विकास में सामाजिक विकास की क्या अवधारणा है, क्या उसकी पृष्ठभूमि है, उसके क्या आयाम हैं, क्या उसके क्या चुनौतियां हैं और उसके साथ साथ उसका क्या सैद्धांतिक एक ढांचा है, उसकी आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो सामाजिक विकास है। कितना ही हम आर्थिक विकास कर लें, कितना ही हम तकनीकी विकास कर लें, जब तक सामाजिक विकास नहीं होगा तब तक ग्रामीण विकास अपने सर्वोत्तम स्वरूप में नहीं जाएगा। तो इसलिए सामाजिक विकास सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ग्रामीण विकास का। और इसी कड़ी में जब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि सामाजिक विकास की अवधारणा क्या है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट? सो डॉक्टर के श्रवण कुमार, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट? Namaskar, sir. Social development is very important topic in the rural context. Why? Because in rural development is also one of the part of the social development. Before discussing about our social development, I would like to explain what is development. Development is a process of growth or progress or any kind of change in the society. That is called as a development. There are different kinds of the development aspects we can observe in the society. For example, social development, economic development, human development, and sustainable development. So these are the different dimensions of the development we can observe in the society. Today we are discussing about the social development. See, social development is very important for any kind of development. With social development only, any kind of development will start only. Why? Because it is focusing on the societal aspects only. So in the social development, there are two kinds of the developments we can observe. First one is individual development and next societal development. In individual development is we have to focus on the individual development. We have to focus on the improving the quality of the people and provide quality of education, health and basic needs to the people. That is important. So that is individual development. And when we are looking into the societal development, that means we have to focus on complete entire community level development. In the population level, development is important. So that is very important for the social development. So combinedly, social development is individual development and social development. And if you look into the social development, the major aspects we have to fulfill in the society. We have to provide quality of life to the rural people, general people, and also the health, education, infrastructure and employment or economical opportunity to everyone. And famous our Indian economist and Nobel laureate Amartya Sen said, development is providing equal opportunity to the everyone. So that is important. In the development aspect, we should not focus on completely economical growth. We should focus on societal needs, social needs also for everyone. So that is also very important. And we have to fulfill some aspects to reach social development in the society.
And first one is poverty reduction, a very important aspect in the social development, which means eradication of the poverty. That means providing economical opportunities and employment opportunity to everyone. That is important. And access to basic services. We know about the basic needs of food and education, health and sanitation and housing facilities to the everyone. These are the basic needs we have to provide everyone. So this is also one of the important aspect in the social development. And also it is also focusing on empowerment and social inclusion. Empowerment means there is no kind of disparities in the gender-based disparities and discrimination against women. And also we have to follow the social inclusion. We have to include everyone, every community, marginalized community, whether it is SC and ST people also. And also community participation also very important for any kind of social development. Why? Because without participation, without involving of the people, it is difficult to sustain social development. And there are important indicators we can observe in the social development. For example, Human Development Index. We already know, everybody knows about HDI index. There are 3 types of parameters: quality of life, expectancy, and education, and also the living standards in terms of per capita income. These are the 3 aspects we can observe in the HDI. So some of the examples we can observe in the HDI, like high literacy rates and low dropout rates. These are the examples of the social development indicators. Why? Because any indicator showing the importance of the particular sector of the society. So that is also very important. And social development is also useful for the social integration and also useful for the people to share their opinions and through better communication, and also useful for the better meaningful relationships, also very important. So overall agenda of the social development is to improving the quality of the life of the people and also providing basic needs like education, health, infrastructure facility to the everyone. That is very important for the social development. Okay, right. So Dr. K. Sravan Kumar discussed at micro level about what is social development, and in one line we can say that, holistic well-being of the society, peoples, or everyone, we can say that. It may be economic, it may be political, it may be health related, it may be, means there, holistic approach is there. So जो सामाजिक विकास है उसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात भी यहाँ पे की है, और दूसरी मानव विकास सूचकांक की बात, HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके जो पैरामीटर्स है उनको ध्यान में रखते हुए सामाजिक विकास की बात यहाँ पे एक अवधारणीय दृष्टि में डॉक्टर के सरवन कुमार जी ने बताई. अब बात आती है अवधारणा की समझ के बाद में जब विषय आता है तो वो सिद्धांत की तरफ आता है. तो डॉक्टर मृणाल कांति देव, व्हाट आर द थियरीज बिहाइंड सोशल डेवलपमेंट, लाइक थियोरेटिकल, व्हाट इज द थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट? डॉक्टर मृणाल कांति देव. So let me focus in a nutshell that what does it mean today when we are talking about social development. See, when we talk about development, means we are moving towards one point from another. Fine, it's a movement. The moment we say social development, so social development is a planned and purposeful process of social change that aimed at improving people's quality of life, especially the disadvantaged and marginalized society, right? That means it goes beyond economic growth, which focuses on human dignity, social justice, equality, participation, and well-being. So in short, if I would like to describe, that development is not about how rich a country is, but about how well its people live.
So let us move on to some theoretical underpinnings. The theory that comes first is modernization theory. What does it mean? The modernization theory, it believes that all societies pass through similar stages of development, moving from traditional to modern one. Now question will arise, why are we saying all societies? All societies means there are certain divisions among society. Let us focus on our Indian context. We know that in terms of social group, in terms of linguists, in terms of religion, there are a lot of divisions. In paper, there are a lot of divisions. So this model cannot be suitable to our Indian society context. So what does it mean when we talk about traditional society? So traditional society means the society is agricultural based society. The society believes in strong customs and traditions. It uses limited technology that prefers primitive method and low productivity. And on the other hand, modern society means technology dependent society, high productivity. There will be a flexibility in terms of customs, traditions, right? And of course, higher education, higher employment. These are or industrialization, of course, rapid urbanization. These talks about modernization. Now, the criticism is that in Indian context, this modernization theory, it does not address the inequality context, social and economic inequality. Let me cite an example from Bihar. We know that Bihar, once upon a time, we used to call Bimaru states. The first state that comes B for Bihar. Now Bihar has come out. Bihar has they've done phenomenal growth. Suppose in 2011 to 12, Bihar's GSDP, that is gross state domestic product, it was around 8.54 lakh crore. 2.47 lakh crore in current price. And according to the latest estimate, in 2023 to 24, it increased to around 8.54 lakh. That is more than 3.5 times in a decade. It's a huge achievement, huge improvement. Now, on the other hand, if we look at the family-wise distribution of BPL in Bihar, out of upper caste people, since Bihar is the first state which conducted caste census. So, among upper caste, around 25% of them, they belong to below the poverty line. Fine. When it comes to OBC, the percentage 33.16. When it comes to scheduled tribe, the percentage is 42.7. When it comes to scheduled caste, the percentage is 42.93. So, if we sum up them, that around 70% or even more than 70% of the people who belong to disadvantaged group, they are yet to come out of poverty line. This is one fact. And on the other, Bihar is doing huge economic growth. So that is what Sravanji said, and I am also emphasizing that social development, it does not mean that only economic development. It's all about the quality of life. It's all about the development of overall society. Now the next theory, let us move on to dependency theory. So dependency theory means when it comes to underdevelopment, it's of course not natural. No economy, no nation should be fully dependent, right, on external forces or other countries. So we have to move ahead. Now, next theory is world systems theory. Again, it's not applicable to us because world theory says that one global economic system, it's not possible. We cannot compare with Western countries or European countries, US or some other countries, right? Even within South Asia, a lot of variations are there. High inequality, if you talk about Bangladesh, Pakistan, the economy of Nepal, India, Bhutan, a lot of variations are there. It's not possible. Now, the next is human development theory. So, development means expanding people's capabilities and freedoms, not just income. That means people will be able to live a healthy life, people will acquire knowledge, they will participate in society. Now, education is something that empowers, choice, not just jobs. And if we look back, then in terms of Human Development Index, that Sravanji already mentioned, let me just add something, that Human Development Index in 1990
the score was of India 0.434, and in 2022 it stood at 0.644. So a rise of about 48%. So it's a long journey. It's a huge achievement. Now, if we talk about life expectancy at birth, it increased by 9.1 years between 1990 to 2022. Mean years of schooling, it increased by 3.8 years over the same period. When it comes to GNI, that is gross national income, that is it reflects our income dimension. It increased by about 287% between 1990 to 2022. One more example I would like to give, that once upon a time, it was a kind of slogan. One movie also made, right? Roti Kapra Makan. That means it indicates about our basic needs: food, cloth, and shelter. Now we have, India, the Bharat, has left behind the era. Now, if we look at the National Sample Survey Organization data, recently, rural households spend 47% on food items and 53% on non-food items. That's showing a paradigm shift toward non-food consumption, such as education, transport, health, and durables. So before 1990, when in rural India, the people's priority was food, cloth, and shelter. Now we have left behind the era. Now people are thinking of expanding their expenditure much on education, transport, health, and durables. The next theory, that is sustainable development, it does not need any introduction. Entire world is working on it. By 2030, we have to achieve 17 sustainable development goals that we can talk later on. And the last thing is participatory development theory, which is very interesting one. See, in this theory, it says that people are not beneficiaries. They are actually agent. Because sometimes our policymakers, academicians, even lawmakers, they say that Manrega beneficiary, Abbas Yojana beneficiary. Actually, this is not the right term. Right? Beneficiary means what? We are not doing any charity. Right? It's a welfare state. It's their right. It's the state's right to provide education, provide home, provide food, these things. So people are agent of change, not beneficiary. That means community involvement in planning, decision-making process, suppose Gram Sabha meetings, etc. So what does it mean? It increases our skills, it increases confidence and control. And how decentralization works, suppose if we look back at 2014, when NDA government came under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the slogan was Sabka Saath, Sabka Vikas. After 10 years, they have modified it. Now it became Sabka Saath, Sabka Vishwas, and then Sabka Vikas. So the moment you are telling Sabka Vishwas, means we are talking about inclusiveness, to include all. No section, no individual should be excluded, right? So one scheme will just, I think, we can explain that how participatory development theory is applicable to India, and which I found most suitable social development process. Suppose Jal Jeevan Mission, JJM Jal Jeevan Mission. Our students may or may not know that in every village or panchayat, it is mandatory to form a civil society that is known as Pani Samiti or water body, whatever it depends state to state. In this committee, 50% of the members should be women, and the rest of the 50% should come from each and every section of the village, maybe SHG members, NGO professionals, farmers, doctors, whosoever. And very interesting thing is that when it comes to community contribution, that 5% of the total capital cost, if it is a hilly or forest state such as Uttarakhand, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Himachal Pradesh, then 5% of the total cost has to be bear by the community, entire village. If it's a plain state such as Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh, Punjab, West Bengal, then 10% of the total capital cost has to be beared by villagers. Now, if somebody does not have money, he or she the household cannot afford, no issue. They can contribute by
labor. I think the more perfect word is Shramdan, right? This is how they can work. And if we make a small comparison, in 2019, when this scheme was launched, around 3.23 crore households, they were having water tap connection before launching of this scheme. Now, by 2025, almost 81% of our rural households, they have water tap connection. That includes 81% of the total Indian rural household. In 2019, it was just 17%. So from 17% to 81% within this time frame from 2019 to 25, it's a phenomenal achievement, and this is what has been possible because of community participation. So this is how I am saying that comparing all the theories, the participatory development theory is one of the best theories that is applicable for rural development. Thank you. Dr. Minal Kanti Dev discussed at micro level about theories behind रूरल सोशल डेवलपमेंट. इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात की, उसमें उनके आधार को बताया. इसके साथ साथ आपने HDI इंडेक्स के आधार पे भी जो सिद्धांत उसके बताया. उसके साथ साथ आपने जो बताया कि कैसे आज के समय में प्रासंगिक जो सिद्धांत है ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात यहाँ पे की गई है, जिसको पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट थ्योरी, सहभागी विकासीय सिद्धांत कहते हैं. इसमें जो आपने एक विषय रखा कि जो एक स्लोगन या एक नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, तो उसका मॉडिफिकेशन होके आप जो है वो ये कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास. उसके साथ साथ जो पार्टिसिपेशन की बात है वो चौथी बात ये कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास. किसी भी सिस्टम को जब डेवलप करना है तो उसमें चाहे किसी भी एस्पेक्ट में सामाजिक विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, तो उसमें जब तक उस सिस्टम के रहने वाले हर हिस्से का प्रयास नहीं होगा, हर वर्ग का प्रयास नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा. कंप्लीट डेवलपमेंट या हम ये कह सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, या उसमें सर्वांगीण विकास की हम बात कर सकते हैं. और उसमें आपने सतत विकास के सिद्धांत की बात भी की. सतत विकास, क्योंकि विकास को निरंतर लेके चलना है, आगे अगली पीढ़ी को देना है तो सततता के साथ देना है, कंटिन्यूटी में देना है, तो इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. अब बात आती है सिद्धांतीय पक्ष को हमने समझा. अब इसके बाद में जो सामाजिक विकास है, उसकी समझ है, उसकी क्या उपागम है, डॉक्टर बलकार सिंह जी क्या एक समझ है इसकी? जी धन्यवाद बूटा जी. डॉक्टर श्रवण कुमार और डॉक्टर मरगाल कांति देव ने काफी हद तक ये साफ साफ बहुत आसान शब्दों में बताया कि सामाजिक विकास क्या है और किन किन पहलुओं को छूता है. एक तरह से कह सकते हैं कि हम एक दृष्टि से देखें, समाज के चारों जो आवरण है उसका समावेशी विकास, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता, मतलब अनेक बातों को शामिल करते हुए तो सबका एक समन्वित विकास कह सकते हैं, सबकी जरूरतें कह सकते हैं, वो यदि समान भाव से पूरी की जाए तो उसे सामाजिक विकास कह सकते हैं. इसी बात आई कि सामाजिक विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उपागम क्या क्या हो सकते हैं. तो जो बात पिछली बातों को जोड़ते हुए उसको बढ़ाते हुए मानव केंद्रित, जैसे दोनों ने और बूटा जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ना कि इकोनॉमी पे डिपेंड, आर्थिक आधार छोड़िए, उसमें मानव पक्ष को ध्यान रखिए. गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सबका समान भाव से विकास हो, सबको अवसर मिले, सबको शिक्षा का अवसर मिले, सबको रोजगार का मिले, सबको अच्छा जीवन जीने का, सम्मानक तरीके जीवन जीने का अधिकार मिले, बेसिक सुविधाएं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये भी उसको समान भाव से मिले. ये पहला उसका एक तरह से कह सकते हैं कि विशेषता है. उस दूसरी आती है समानता और सामाजिक न्याय. सामाजिक न्याय, यदि कोई बात आती है किसी एक पक्ष के न होके, अमीर गरीब, धर्म, जाति, लिंग भेद, इसको दरकिनार करते हुए समान भाव से सामाजिक न्याय मिले. हक की बात की जाए, जहां फैसला हो
तो सबकी भागीदारी से एक तरह से सबको केंद्रित करते हुए फैसला हो, ये बहुत जरूर समानता। और जो एक बात आती गांव के संदर्भ की बात करें, सहभागिता और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, जैसे ग्राम सभा और चर्चा की थी पीछे, समय छाता समूह, या गांव में जैसे अभी चर्चा हुई कि देव जी ने बताया कि श्रमदान, जैसे गांव में पहले क्या होता था कि तालाब की खुदाई है, मंदिर का निर्माण है, चौपाल का निर्माण, जो भी काम होते थे वो सबकी सहभागिता से होते थे। जिस गांव में, जिस कस्बे में या जिस समाज में सहभागिता नहीं होगी, वहां पर त्रुटि क्या आती है, तो जो विकास का काम हो रुक जाता है। क्योंकि लोग की सलाह के बगैर, लोगों की उनकी इच्छा के बगैर कोई काम करोगे तो वो विकास रुक जाता है, नहीं चल पाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते उस तरह का नहीं हो पाता है। इसलिए सबकी सक्रिय भागीदारी हो, सर सम्मिलित हो, उससे क्या होता है, आर्थिक पक्ष कमजोर होकर श्रमदान पक्ष मजबूत होता है। उसमें जो काम मन से, लगन से किया जा सकता है वो आप पैसे से उस तरह से नहीं कर सकते। जो समर्पण मिल के काम में होता है वो पैसे से अकेले नहीं हो सकता। इसलिए सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। इसी का अगला जुड़ा होता है समावेशी विकास। समावेशी विकास ये होता है कि वो जो कार्य किया गया उसमें सभी लोग शामिल हो, वो महिलाओं के लिए कारगर हो, पुरुष के लिए कारगर हो, वो बच्चों के लिए कारगर हो, वो बुजुर्ग के लिए हो, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं उनके लिए हो, और जो हमारे समाज में जातियां पाई जाती सभी जातियों के लिए समान हो, सभी के लिए फायदेमंद हो। या जो तालाब है, तालाब सभी के लिए फायदेमंद है। रास्ता को, कच्चे को पक्का बनाना है या रास्ता ठीक करना है, सभी के लिए फायदेमंद है। या गांव के अंदर लाइब्रेरी खोलने का कार्यक्रम है, सभी के लिए फायदेमंद है। यदि गांव में कोई जागरूकता कार्यक्रम होता है वो सभी के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा एक आता है शिक्षा और जागरूकता। ये जागरूकता और शिक्षा दोनों बहुत जुड़े हुए, बहुत नजदीक से हैं। शिक्षा का अवसर क्या है कि सभी को समान शिक्षा मिले, और जागरूकता का मतलब है कि उसका नैतिक हक बनता है कि वो भी उस चीज को जान सके और उसमें भाग ले सके। और शिक्षा भी उस तरह की शिक्षा समावेशी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, अलग अलग तरह की शिक्षा समाज में दी जाती है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरा समाज लाभान्वित हो उस तरह की शिक्षा दी जाए, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे श्रवण जी ने और देव जी ने, बूटा जी ने बताया था कि 1960 तक ये रहा था रोटी कपड़ा और मकान बहुत जरूरी है, परंतु 90 के दशक आते आते ये क्या है, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जैसे डाटा में बताया गया कि आज का व्यक्ति 42-43% खाने पर उसके बाकी चीजों पर खर्च करता है, क्योंकि आज जीवन में ये मनुष्य समझ चुका है कि जितना स्वास्थ्य अच्छा होगा वो अच्छा काम कर सकता है, अच्छी वैज्ञानिक सोच रखता है, अच्छा जीवन जी सकता है, परिवार को समय दे सकता है, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, सामाजिक मजबूत होगा, और दृष्टिकोण उसका समाज का समावेशी होगा। ये स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन में, गुणवत्ता जीवन वो हर तरह से समाज को एक तरह से सभी पक्षों को लेके वो अपना काम कर सकता है और सभी को साथ लेके चल सकता है, बहुत जरूरी है। इसमें एक छोटी सी बात आती है कि जो भारतीय समाज की बात करें, महिला सशक्तिकरण, ये एक अनछुआ पहलू रहा है। 1900 से पहले की शताब्दी की बात करें कि महिलाओं के बड़े मुद्दे रहे हैं, आज के समय में तो इतने ज्यादा नहीं रहे। उसमें भी आज भी जरूरत है। जैसे पंचायती राज में वो दिया गया है कि आरक्षण देना क्यों पड़ा, कहीं न कहीं वंचित थे, कहीं न कहीं वो समानता चाहिए थी, इसलिए उनको जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें यह दिया गया था कि 33% सीटें महिलाओं को रिजर्व होगी। इसमें क्या है कि समाज में चाहिए कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले। और सबसे बड़ी बात है जो भारतीय समाज की जो खूबसूरती है कि विविधता में एकता, ये एकता है कि सामाजिक एकता है, सामंजस्य की एकता है। कोई भी काम होता है उसमें हर वर्ग का, हर धर्म का, हर जाति भाग लेता है। खेल लगाइए, जब खेल होता है तो कोई धर्म जाति नहीं देखता, सारा गांव करता है। कोई स्वास्थ्य कैंप लगाता है, कोई स्वास्थ्य शिविर लगाता है, कोई श्रमदाना काम करता है, या कोई भी काम करता है तो पूरा गांव सहभागी होता है। जैसे बाढ़ के समय में देखते हो पूरा गांव आ जाता है, भूकंप के समय में पूरा समाज ही आ जाता है। शहर गांव कुछ भी छूते नहीं रहते, सारा समाज जुड़ता है, क्योंकि सामाजिक की बात है। और मूल्य आधारित विकास, देखो विकास के अलग अलग पैमाने, जैसे बताया कि आधुनिक समाज है, परंपरागत समाज है, मान ले आर्थिक रूप से विकास है,
मूल्य आधारित मूल्य, वो उसके काम का विकास हो, वो उसके जीवन से संबंधित विकास हो, उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए संबंधित विकास हो, वो सतत विकास हो, गांव भी बचा रहे, वो समाज भी बचा रहे, उसके मूल्य भी रहे, उसकी परंपरा भी रहे, उसके रीति रिवाज भी रहे। क्योंकि जब कोई चीज खत्म हो जाती तो समाज में असंतुलन, इनबैलेंस हो जाता है। जब इनबैलेंस होता है तो सिस्टम एक तरह से गड़बड़ा जाता है, वो एक सतत विकास नहीं हो पाता। इसमें हम कह सकते हैं कि जो बातें बताई गई है, यदि ये बात इस समाज में शामिल होगी, वो सामाजिक विकास एक सतत, निरंतर और आगे बढ़ने वाला समाज होगा। जी, तो सामाजिक विकास की एक समझ और इसमें उपागम में दृष्टि जो डॉक्टर बलकार सिंह जी ने बताई, उसमें पीछे की बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ और इसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो सामाजिक विकास है उसको समझने के लिए हमें एक इंक्लूजन की बात, समावेश की बात करनी होगी, हमें जो आधारभूत ढांचा है उसकी बात करनी होगी, हमें उसमें जो तंत्र है, पूरा सामाजिक तंत्र है, सामाजिक ताना बाना है, उसके एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म हिस्से पे जाके उसको समझना होगा और उसके अंदर उसको समझ के उसको नियोजन की प्रक्रिया में लेके आना होगा एक। और उसके साथ साथ सामाजिक विकास में एक बात और महत्वपूर्ण आती है, इसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से ये चलता है। सहभागिता की बात है यहाँ पे, तो औपचारिक रूप से कोई भी नीति या नियम प्रणालियां जो चल रही है उनमें लोग सहभागी करें, उसके साथ साथ लोग विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए विशेषकर रूप से अपनी तरफ से प्रयास भी करें। जैसे आजकल हम देखते हैं सामाजिक समरसता भी एक महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक विकास के लिए सामाजिक समरसता भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आर्थिक तंत्र में समाज के सभी वर्गों को साथ लाना अच्छी बात है, और क्या कहते हैं, तकनीकी रूप से समाज के सभी वर्गों को साथ लाना, उसके लिए काम करना अच्छी बात है। लेकिन समाज के सभी वर्गों के साथ एक समरस की भाव हो, समता की भाव हो, इक्विटी, इक्वालिटी की बात हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि पूर्व में भी हम चर्चा करेंगे, न्याय की व्यवस्था हो, सिर्फ व्यवस्था ही नहीं हो बल्कि उसमें भी हम सहभाग करें सभी लोग, कि केवल एक सिस्टम बन गया है, एक तंत्र बन गया है, उसी में न्याय होगा ऐसा नहीं, पूरे समाज को इसमें अपनी सहभागिता दिखानी होगी, एक कॉन्शियस चेतनीय दृष्टि से एक सहभागिता दिखानी होगी, तब जो सामाजिक विकास का हमें कहे सही रूप में स्वरूप देखने को मिलेगा। तो एक समझ के रूप में हमने सामाजिक विकास को समझा। अब इसके साथ साथ इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं सामाजिक विकास की, कि क्या इसकी पेक्युलरिटीज हैं, क्या यूनिक बातें हैं सामाजिक विकास की, और क्या क्या आयाम है, इस पे भी डॉक्टर बलकार सिंह जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसा कि मेरे साथी बूटा जी ने बताया कि ये कहते हैं कि सामाजिक विकास के विभिन्न पहलू है, क्या क्या आयाम है। देखो, आयाम तो जो हमने चर्चा करी उसी से हम शुरुआत करते हैं। आर्थिक पक्ष, कोई भी समाज का विकास आर्थिक आयाम या आर्थिक पक्ष के बगैर मजबूत नहीं हो सकता। उसमें आजीविका बहुत जरूरी है, उसमें रोजगार बहुत जरूरी है, उसमें उसकी इनकम बहुत जरूरी है। और भारत के विकास समाज के संदर्भ में बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में एक बड़ा कई सालों से रहा है कि गरीबी है, गरीबी रेखा में जीवन जीते हैं। ये बात सही है कि कहीं न कहीं लोगों को जो सुविधाएं मानव जीवन के लिए, विकास के लिए चाहिए, वो कहीं न कहीं कुछ वर्ग जो वंचित रहे हैं या पिछड़े रहे हैं उनमें वो प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए आर्थिक आयाम से उनको जीवन में गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए, उनको अवसर देने के लिए तो आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत है होना चाहिए। क्योंकि आर्थिक पक्ष मजबूत नहीं होगा तो सोच नहीं सकता है कि पीछे रिसर्च आई है कि गरीब व्यक्ति गरीब ही नहीं होता, सोच भी उसकी गरीब हो जाती है। क्योंकि वो कोई भी मान ली जाए कि रिस्क का काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसका पिछला जो जीवन है वो उसको याद आता है कि कहीं न कहीं यदि मैं जोखिम लेता हूं तो कहीं उसी लेवल पर ना पहुंच जाऊं। इसलिए गरीबी सिर्फ ये नहीं है कि उसको सुविधा से वंचित करती है, उसकी सोच को भी बहुत छोटा कर देती है, उसको आगे बढ़ने से रोकती है। उसको जो कहते जोखिम लेता, क्योंकि आर्थिक रूप में जोखिम ज्यादा होते हैं, उसको जोखिम लेने से भी रोकती है। और उसको ये उसको नहीं, उसकी परिवार को भी, यदि कोई व्यक्ति गरीब रहा है तो उस परिवार को भी कहता है कि रिस्क मतलब बड़ी मुश्किल से हम लोग इस गरीबी से निकले हैं या जीवन ठीक आया है, तो कहीं ना उस पिछले ट्रैक पर चले जाए।
यह भी सोच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आदमी ठीक कंडीशन में जीवन जीता है तो जोखिम लगकर कोई भी आर्थिक काम कर सकता है, ताकि कम से कम वो अच्छे जीवन का लिए प्रयास कर सकता है। इसलिए जो गरीबी का पैमाना था, या जो गरीबी मापी गई थी, या जो किसी कारण से गरीबी है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि उसका मानव जीवन के जो विभिन्न पहलुओं से उसको वंचित रखती है। एक तरह से कह सकते हैं उसकी जो सुविधाएं हैं उससे उसको लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए आर्थिक पक्ष की समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगला शैक्षिक आयाम। शैक्षिक क्या मतलब? शिक्षा ही समाज की परिवर्तन की रीढ़ है। ये मान के चल सकते हैं कि जो आज हम इस जगह बैठ के आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये सब शिक्षा की देन है। नवाचार हो, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन हो, या कोई विशेष चीज आए, सारा शिक्षा के माध्यम से आता है। शिक्षा में भी अलग चीजें, साक्षरता सिर्फ चीजों को जानने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो शिक्षा जिसमें जीवन के विभिन्न पहलू शामिल हो, समझ सके क्या जरूरी है। फिर आता तकनीकी शिक्षा। टेक्नोलॉजी शिक्षा होता है कि जो आदमी अपने सपनों या कल्पना के माध्यम से सोच सके कि ये भी हो सकता है। क्या किसी ने 20-30 साल पहले सोचा था कि अब ड्रोन से स्प्रे किए जाएंगे, किसानों के साथ होगा? क्या किसान खेत में बैठा हुआ अपनी फसल कर मौसम की जानकारी ले सकता है? मौसम के बारे में तो यदि पुरानी बात करें, कुछ समय पहले पक्षियों को या जीव जंतुओं का आभास होता था, इंसान तो अंदाजा लगा सकता था, पर तो आज के समय मौसम की जानकारी भी पहले मिल जाती। सारी टेक्निकल एजुकेशन का प्रभाव है। और एक आता जीवन कौशल शिक्षा। जीवन कौशल, वो अपनी प्रतिभा को निखार सके। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण समाज में, कि वो यदि किसी की रुचि कला में है तो उसको ऐसे अवसर दिए जाए तो कला को उच्च माध्यम पर ले जा सके, वो अपनी प्रतिभा को निखार सके और समाज को उसको लाभ हो उस प्रतिभा के कारण, और लोग मोटिवेट हो। इसके बाद आता बहुत महत्वपूर्ण, यदि आज के संदर्भ में मानूं तो स्वास्थ्य सबसे उत्तम माना जाता है। कहते पहला सुख निरोगी काया। ये आप हर जगह बोर्ड पे, दीवारों पे, किताबों में लिखा देखते हैं। क्यों लिखा देखते हैं? कि स्वस्थ व्यक्ति सोच स्वस्थ होती है, अच्छा सोच सकता है, अच्छा काम कर सकता है, अच्छी मेहनत कर सकता है। कहने का मतलब यदि स्वास्थ्य उसका अच्छा है, एक समय वो कम भोजन में भी काम कर सकता है, कम सुविधाओं में काम कर सकता है। यदि उसको पैदल चलना पड़े या उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, वो काम कर सकता है। परंतु उसके लिए जरूरी क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं बहुत जरूरी है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्या होता है? जो समाज को चाहिए, जैसे माता को जब गर्भवती से पहले उसको जो सप्लीमेंट चाहिए, जो उसको दवाइयाँ चाहिए, जो उसको जानकारी चाहिए, जो उसको बच्चे से बीमारी से पहले के इंजेक्शन चाहिए, बहुत जरूरी है। और उससे माता और शिशु स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा। इसलिए उस समाज का मान लीजिए जो पैमाना मापा जाता है, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो माँ और बच्चे का स्वास्थ्य का पैमाना माना जाता है। और हम गर्व से कह सकते हैं पिछले 10-15 साल में बहुत उन्नति की है। मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छा, जो भारत के संदर्भ में थोड़ा सा विदेशियों का प्रभाव था कि भारत में स्वच्छता नहीं है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में बहुत बदलाव है। स्वच्छ भारत मिशन जो ये अभियान चलाया गया था, उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। और मैं आज भी कहता हूं, यदि स्वच्छ भारत मिशन को सही तरीके से गांव के अंदर चला जाए तो मैं कहता हूँ सारे भारत की काया पलट हो सकती है। क्यों कहता हूँ? इसमें शहर भी शामिल है, क्योंकि कोई भी शहर की आबादी हो, शहर का विकास हो, गांव के लोगों के आधार पर होता है। गांव के लोग शहर में आते हैं, शहर बढ़ता है, नगर बनते हैं, महानगर बनते हैं। यदि वो बेसिक गांव के लोगों को सिखाया जाए तो आपको फिर शहरों में ये अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ गांव को इग्नोर करके आप भारत को अमीर या स्वस्थ नहीं कर सकते। इसके साथ सांस्कृतिक आयाम, जैसे हम गांव की बात करते हैं कि ग्रामीण विकास का ही विषय है और समाज की अवधारणा गांव से शुरू हुई थी। सांस्कृतिक विकास जो हमारे मूल्य है, जो हमारी कला है, संस्कृति है, जिसको हम टुकड़ों में आजकल लुप्त होते देख रहे हैं, या हम शामिल होते थे, दादा शामिल होते थे, चर्चा रहती है, सोशल मीडिया पर देखते हैं, उसको बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो मनुष्य एक सामाजिक
एक मशीनरी बन के रह जाएगा, जिसमें सुकून की बातें, जिसमें कह सकते हैं कि अच्छे जीवन की बातें, गुणवत्तापूर्ण जीवन नहीं आ सकता। तो ज्यादा लंबा न लेते हुए एक राजनीतिक आयाम बहुत जरूरी है, क्योंकि लीडरशिप नहीं होगी तो अच्छी सोच नहीं होगी, अच्छी देश को दिशा नहीं दे पाएंगे, अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। एक लैंगिक आयाम भी है इसमें, जो समानता हो, महिला पुरुष की ना हो। और एक आता है, जैसे बूटा जी ने बताया, समरसता और सामाजिक न्याय का समावेशन बहुत जरूरी है। जिस समाज में भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अवसर होंगे, वो समाज एक तरह से कहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से उन्नति कर सकता है, सोच डेवलप होगी। और एक जो आज के टाइम में देखते हैं, दो मैं बहुत महत्वपूर्ण आयाम रखूंगा, पर्यावरण आयाम। पर्यावरण बहुत जरूरी, कितना विकास कर लीजिए, कितना अच्छा स्वास्थ्य हो, कितना अच्छा खान पान हो, कितनी अच्छी शिक्षा हो, जब एनवायरमेंट नहीं अच्छा होगा, पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा, सारी चीजें बेमानी होगी। सब चीजें सिर्फ कंज्यूम, इलाज, उपचार, भागदौड़ में खत्म होती चली जाएगी। जल जीवन, जल, भूमि और वायु जब तक स्वस्थ नहीं होगे, सारी चीजें बेमानी है। और एक थोड़ा सा एक बात और आती थी, आज इस दिन बात करें टेक्नोलॉजी और डिजिटल आयाम, ये बहुत जरूरी है। गांव में विकास में बहुत परिवर्तन आया है। पिछले 10 सालों की बात करें, गांव से शहर में जो माइग्रेशन रुका, उसका कारण है आधारभूत सुविधाएं और तकनीकी। और इन सब के लास्ट में एक जो बात आती है, नैतिक मूल्यपूर्वक आयाम। बहुत से आयाम कह सकते हैं, लेकिन यदि हम चर्चा का मुख्य बात करें, यदि नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, हमें पता है कि लाल बत्ती रुक के ही चलना है, सड़क देख के ही क्रॉस करना है, यदि दूसरे का हक है, दूसरे की बारी पहले है, उसको आने दीजिए, ये हम ना करें, ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं होगी तो सारा जीवन बेमानी है और समाज का विकास, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। और बहुत से यही मेरा था कि ये भी आयाम बहुत जरूरी समाज के लिए। जी, आपने सामाजिक विकास की विशेषताओं और उसके विभिन्न आयामों के वैविध्य को भारतीय संदर्भ में रखते हुए सूक्ष्म दृष्टि डाली, और उसमें आपने बताया कि सबका एक समावेशन करते हुए सभी के प्रयास से ये संभव है। अब अगला विषय आता है डॉक्टर के श्रवण कुमार, लाइक व्हाट आर द फैसिलिटेटर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर सोशल डेवलपमेंट? Facilitators and challenges of the social development. First of all, facilitators, like professionals, those who are working on the mobilizing of the people. That means they are working on the community mobilization of the people, focusing on only involvement of the development process. Facilitators works on the motivating the people and empowering the people to involving the development process, and they act as a catalyst and mediators between the community and the development process. And what are the main objective of the facilitators is community empowerment and mobilization. With the participation of the developmental, any kind of development happens only with the participation of people only, the participation of community only. Without participation, it is difficult to maintain process, and also it is not leads to development. Sometimes facilitators like NGO representatives and government officials also, some project officers and some of the social workers and mediators also act as a facilitators. So the main work of the facilitators is to motivating the people to involving the development process. That is very important aspect. And coming to the challenges of the social development is very important nowadays. Why? Because social development is always focusing on the improving of the quality of life and providing basic infrastructure and social justice.
But there are a lot of challenges we can observe in the society. For example, poverty and inequality. Today, everywhere, not only India, everywhere in the country, everywhere in the throughout world, we can observe poverty. For example, in Indian context, according to the Niti Aayog statistics 2024, in our India, 24.82 crores of the people were escaped from the multi-dimensional poverty. But still we are facing this poverty issue. People are below poverty line also. There is a disparities between the people also, rural, urban, and also rich and poor also. This is also one of the major challenge. And unemployment and skill gaps. Today we can observe unemployment rate always increasing day by day, due to there are a lot of reasons behind the unemployment rate, and we can also observe skill gaps among the youth. That is also major challenges for the social development, and also some gender disparities like discrimination, violence against women. These are the major challenges to the social development, and some healthcare access and quality of healthcare access. That means poor healthcare facilities, infrastructure, malnutrition. These are the small things. It leads to major challenges of the social development, and social exclusion and discrimination also, due to the casteism, due to some neglected communities, marginalized people. So these are the major challenges we can observe in the nowadays in the society, and also some factors like urbanization, rapid growth of the cities, and urbanization leads to destroying the social relations, and also impact on the society in different forms. So that is also major challenges to the social change. And finally, environmental degradation. That means overusing of natural resources and the pollutions we are observing. So non-eco-friendly measures, practices we are observing. These are all challenges for the social development. Majorly, the social development is focusing on the improving the quality of life and providing the basic needs. That is perfect. But the society facing lot of challenges in terms of these aspects for social development. So we have to focus on this. Government also focusing on these challenges and implementing some policy interventions like programs and schemes also. There are a lot of reasons behind the challenges like rapid urbanization, technological advancements, globalization, social movements. These are some of the reasons behind these challenges. We have to focus on the policy interventions also. Okay. So we discussed about the facilitators and challenges before the social development. Dr. Mrinal Kantidev, we can talk about social development in the Indian context or in a Bharati context. भारतीय संदर्भ में सामाजिक विकास. So, what is? So, when it comes to social development theories, earlier whatever we have discussed, these were global perspective, right? Since we talk about Atmanirbhar Bharat, self-reliance, so I think that in terms of theory also, we should not adopt from outside. Since our India, we have several indigenous social development theories. The first one, that is Gandhian theory for social development, that you know that it talks about people-centered, ethical and village-based economy, Sarvodaya, self-reliant villages, small-scale industries, non-violent social change like this, and Khadi, Gramodyog, these things we know. So Gandhian concept says that social development means moral progress, social justice, not mere economic growth. The next that comes is Nehruvian model of development. So Nehruvian model of development is nothing but the Indianization or Bhartiyakaran of modernization theory. And how does it work? I think it doesn't require any further explanation, since we have exemplified the condition of Bihar. Next, that is very important,
students should know about our Indian socialism theory that was introduced by Dr. Ram Manohar Lohia, was known as renowned Indian socialist thinker. He emphasized on 7 revolutions that are known as Saptakranti models. The revolution against caste inequality, revolution against gender discrimination, revolution against economic inequality, revolution against foreign domination. Suppose in today's context, if we say that whom we buy fuel from and where we buy it should be decided by us, not by others. The revolution against centralization of power. Next, revolution against injustice and violence. Revolution for ethical politics, that is zero tolerance for corruption. Next, it talks about Chokambaraj, that is 4th pillar state, village, district, province and state. So it basically talks about decentralized socialism. So according to Ram Manohar Lohia, social development means equality, justice and participation. Next, we move on to a great theory, that is integral humanism, that is Ekatma Manav Darshan, which was introduced by Pandit Dindayal Upadhyaya. It talks that development must be holistic, balancing material, moral, spiritual and social needs of human beings. So there are certain key principles. Number 1, that human being as a whole means body, mind, intellect and soul. Harmony over conflict means society as an organic whole, not class struggle. Swadeshi means indigenous production and self-reliance. Decentralization means strong villages and local economies. Ethical economics, wealth with moral responsibility. So, economy should serve human dignity, not profit alone, and emphasize on cultural continuity and Indian traditions. And it has relevance today. If we look at Antadvaya, means the upliftment of the individual who is standing in the queue, the last individual who is standing in the queue. So, according to Dindayal Upadhyaya, social development means economic growth and ethical and cultural balance. So, let me just draw a comparison that why is it important than our Indian socialism. Suppose, let me cite an example from Rajasthan. Rajasthan is the first state which introduced Panchayat Raj system in India. And Rajasthan is the state which introduced us a term that is Sarpanchpati, that means deprivation of women. This is one side of the coin. Now, other side of the coin, Rajasthan is the state which introduced us India's first MBA degree holder Panchayat Sarpanch, who is known as Shavi Rajabat from Soda village, right? So, one more thing, that if we look at the policy level illustrations, then Pradhan Mantri Awas Yojana. Our Indian culture, Bharatiya Sanskriti, teach us that, and even we hail our country, we say Bharat Mata Ki Jai. Means what? We consider our country as a mother, right? So if we look at the policy level illustration, the Pradhan Mantri Awas Yojana, it's a strict provision that the owner of house should be a woman. So this is how we should empower the woman. Right. So this is how, what I think, comparing all the theories today, that integral humanism is the best theory practice for social development in Indian context. Thank you. जी, तो आज हमने जो चर्चा की उसमें पूरे अवधारणीय सिद्धांत की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए चर्चा की, सामाजिक विकास की, जिसमें आपने बताया विभिन्न प्रकार के जो भारतीय दृष्टि में, जैसे गांधी, नेहरू और राम मनोहर लोहिया जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का एक भारतीय दृष्टि में क्या कंट्रीब्यूशन है सामाजिक विकास के लिए। इसके साथ साथ हमारी जो भारतीय व्यवस्था थी, भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें भी एक भाव था जो प्राकृतिक रूप से निहित था, जिसमें आज हम एक शब्द संस्कृत के एक लाइन में बोल देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार। जब हम पूरे संसार को एक परिवार मानते हैं तो हमारा समाज तो परिवार है ही। यहाँ पे फैमिली सिस्टम की बात भी है, परिवार एक व्यवस्था के रूप में। तो पारिवारिक गुणों के कारण हमारे यहाँ पे क्या है कि हम की भावना भी है, वी फील सेंटीमेंट भी है, जिसमें सबका साथ और सबका विकास की भावना स्वतः ही निहित होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय सामाजिक विकास में अगर भारतीय दृष्टि को मूल रूप से अगर अपना लिया जाएगा तो विकास निश्चित होना है, और वो हो भी रहा है।
इसी के साथ आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।